नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, भूला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेवा शर्मा। 2023 का पहला शो, हैप्पी न्यू ईयर टू यू फ्रॉम अस। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। नया साल पर हम लोग बहुत रेजोल्यूशंस बनाते हैं और सबसे पहले का रेजोल्यूशन है कि हम जिम का मेंबरशिप लेते हैं। पहले हफ्ते में तो सभी जिम्स बहुत बिजी होते हैं और धीरे धीरे लोग जिम जाने बंद कर देते हैं। हमें ऐसा रेजोल्यूशन बनाना चाहिए जो हम पूरा कर सके। ये थी रेजोल्यूशंस के बारे में। आप सभी का फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैनेडियन ब्लड सर्विसेज को सभी टाइप्स का ब्लड का ज़रूरत है। अगर आप से हो सकता है तो आप ब्लड डोनेशन करें। I'll be right back after these words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vick Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vick Prasad now on 604-306-6647. Vick Prasad is associated with Craft Mortgages. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Arvind's Curry and Cocktail, Indian cuisine. They do catering for all occasions and they do free delivery. Please call 604-515-1070. Address is 420 6th Street, New Westminster. Open 7 days a week from 11 a.m. to 9 p.m. For deliveries, call 604-515-1070 or arvindscurry.com. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फीजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। सर्वप्रथम नए साल आप सभी को शुभ और मंगलमय हो। प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका गिरमिटियों के सम्मान में नेशनल हॉलिडे घोषित किया है, जिससे वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन पैसिफिक प्रसन्न है। महासचिव मंजीत प्रकाश का कहना है कि घोषणा फिजी के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट है, जिसे आने वाले पीढ़ियों के लिए याद किया जाएगा। प्रकाश का कहना है कि इसे गिरमिटिया समुदाय से जुड़े सभी लोगों में खुशी का लहर दौड़ गया है। पिछले गुरुवार को प्रधानमंत्री ने देश को एक बहुत ही शानदार स्पीच में बताया कि वो 2 और नेशनल हॉलीडेज को लाना चाहते हैं। गिरमिटिया डे से साथ साथ रातू से लाला सुकुना डे को भी वापस लाया जाएगा। जिन पार्टियों ने सरकार बनाई है वे इस बात से सहमत है कि मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो एलोकेशन प्रधानमंत्री पर निर्भर है, बशर्ते कि कोalition पार्टनर्स के साथ परामर्श किया जाए। पीपल्स अलायंस, नेशनल फेडरेशन पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ने शुक्रवार को अपने कोalition डील को सील किया। समझौते में कहा गया है कि कैबिनेट में 20 से अधिक मंत्री नहीं रहेंगे। एग्रीमेंट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री पीपल्स अलायंस के सदस्य होगा और 3 उप प्रधानमंत्री होंगे, जिनमें से प्रत्येक एनएफपी, सोरेल्पा और पीपल्स अलायंस के होंगे। इसमें कहा गया है कि सोरेल्पा मंत्री एजुकेशन, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन और आयतों के मामले के विभागों को संभालेंगे। एग्रीमेंट में और कहा गया है कि सभी मंत्री मिनिस्ट्रियल कोड से बंधे होंगे और प्रतिबंधों के अधीन होंगे, जिसमें डिसमिसल भी शामिल है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो कोalition पार्टनर्स के साथ परामर्श किया जाएगा। एक्टिंग प्रधानमंत्री के पद पर 3 डेप्टी
प्रधानमंत्रियों के बीच बारी बारी रोटेट किया जाएगा। पीपल्स अलायंस और एनएफपी ने सोडेल्पा के इस शर्त पर भी सहमति जताई है कि सरकार को 2013 के संविधान के रिव्यू पर व्यापक रूप से परामर्श करना चाहिए। सोडेल्पा के और कुछ मांगे इस प्रकार है। 12 महीने के अंदर अंदर ग्रेट काउंसिल ऑफ चीफ्स को फिर वापस स्थापित करना पड़ेगा। सरकार को अगले 2 साल में इजराइल में डिप्लोमेटिक मिशन को खोलना होगा। $90 मिलियन जो सरकार यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ पैसिफिक से उधार लिया था उसको वापस चुकाना होगा। परमानेंट सेक्रेटरी लेवल से नीचे जितने भी सिविल सर्वेंट है उन सभी का रिटायरमेंट एज 55 से बढ़कर 60 कर देना चाहिए। मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड इमिग्रेशन पीओ तिकंदुगादुआ का कहना है कि पुलिस या रिपब्लिक ऑफ फिजी मिलिट्री फोर्सेस के ऑफिसर्स के लिए कोई वेतन या अलाउंस में कटौती नहीं होगा। उनका कहना है कि इस कटौती के बारे में ना तो सोचा गया है और ना ऐसा होगा। मंत्री का कहना है कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस प्रोफेसर विक प्रसाद ने भी इस पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री सितिवेनी रबुका का कहना है कि गवर्नमेंट बिल्डिंग के बहुत सारे ऑफिशियल व्हीकल है और उन्हें नहीं पता कि उनका उपयोग कौन करता है। रंबुका का कहना है कि फिलहाल उनके ड्राइवर को अपना कार पार्क करने में दिक्कत हो रही है। प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्हें सरकारी फ्लीट को रीजनेबल बनाना होगा और देखना होगा कि वे खर्च कहां कर सकते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विलियम गवोका ने पुष्टि की है कि सरकार मीडिया फ्रीडम को प्रतिबंधित करने वाली किसी भी चीज़ को हटाना चाहती है और यह बहुत जल्द होगा। पीपल्स अलायंस, नेशनल फेडरेशन पार्टी और सोडेल्पा के बीच कोलिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के बाद मीडिया से बात करते हुए गवोका ने कहा है कि वे चाहते हैं कि मीडिया पूरी तरह से स्वतंत्र रहे। उप प्रधानमंत्री का कहना है कि यह अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है कि मीडिया एक्ट को हटा दिया जाए। गवोका कहते हैं कि कोalition पार्टीज ने तीनों लीडर्स पर इन पर पूरी तरह से सहमति दिया है। सीआईडी हेडक्वार्टर्स ने फॉर्मर अटॉर्नी जनरल अय्याज सैयद कयूम के खिलाफ बॉर्डर अलर्ट जारी किया है। उन पर कथित तौर पर सांप्रदायिक एंटागोनिज्म भड़काने के एक मामले की जांच की जा रही है। अलर्ट में कहा गया है कि ऐसा माना जा रहा है कि सैयद कयूम इस समय ऑस्ट्रेलिया में है। पुलिस कमिश्नर ब्रिगेडियर जनरल सितिवेनी गिलिहो ने कहा है कि ये सीआईडी विभाग द्वारा अपनाई जाने वाली एक समान प्रतिक्रिया है। पुलिस कमिश्नर के अनुसार सीआईडी को सूचित किया गया था कि यह करने की प्रतिक्रिया तब होती है जब वो व्यक्ति देश लौटता है ताकि आगे की जांच किया जा सके। उनका कहना है कि सैयद कयूम के खिलाफ पिछले सप्ताह एक रिपोर्ट दर्ज किया गया था। आप देख रहे फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ स्थानीय समाचार। सरी आरसीएमपी पब्लिक से 2 लोगों के साथ बातचीत करने के बचने के लिए कह रही है। वो दोनों गैंग से जुड़े हुए हैं। उनका नाम करणवीर गर्चा और हरकिरत झट्टी है। आरसीएमपी ने कहा है कि उन दोनों की पहचान जारी की गई है ताकि परिवार और दोस्तों सहित लोग अपनी निजी सुरक्षा के लिए कदम उठा सके। पुलिस लोगों से 911 पर कॉल करने के लिए या वायलेंस या सस्पिशियस एक्टिविटी के बारे में किसी भी जानकारी की सूचना पुलिस को देने के लिए कह रही है। 1 लीटर रेगुलर गैस की कीमत जनवरी 1 से बढ़ जाएगी। क्रिसमस डे को गैस प्राइस $1.67 था जो न्यू ईयर से बढ़कर अब $70 हो गया है। आप देख रहे फीजी इन फोकस विक प्रसाद के संग अब कुछ खेल कूद के जगत से जानकारी। ब्राजीलियन फुटबॉल लेजेंड पेले की मृत्यु हो गई है। वो 82 वर्ष के थे। उनके किडनी और प्रोस्टेट में प्रॉब्लम था। ब्राजीलियन स्ट्राइकर अपने करियर में 1363 अपीयरेंस किए थे और उसमें से 1281 गोल्स बनाए थे। पहले एकमात्र ऐसे ही प्लेयर थे जिन्होंने वर्ल्ड कप को 3 बार जीता था। 1958, 1962 और 1970 में उन्होंने ब्राज़ील को जीत दिलाई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबिया साइड अल नसर क्लब के लिए अब 2025 तक के लिए खेलेंगे। पोर्चुगीज सुपरस्टार वर्ल्ड कप के दौरान मैनचेस्टर यूनाइटेड से टर्मिनेट हुए थे। सीबीएस स्पोर्ट्स के अनुसार फॉर्मर रियल मैड्रिड प्लेयर को 75 मिलियन यूरो के पे सीजन पर साइन किया गया है। अंत में आप सभी को नया साल शुभ और मंगलमय हो। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया विक प्रसाद जी। अब हम
बात करेंगे एक हॉकी प्लेयर के मम से। शायद आपने सुना होगा कुकिटलम में एक प्लेयर पर किस तरह से रेसिज्म से गुजरना पड़ा। देखिए ये इंटरव्यू प्लेयर के मम के साथ। फीजी इन फोकस जो भी कोई देख रहे हैं, आप सभी को कमिला का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बोला फीजी। जी हाँ दोस्तों, हमारे नए साल का 2023 का पहला शो है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स। अब हम चलते हैं, आपकी मुलाकात कराते हैं सिंडी से। शायद आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि देयर वाज अ केस नॉट टू लॉन्ग अगो, कुकुटलम का बात है कर रही हूँ मैं, कि वहाँ पर एक बच्चा था अबाउट 14-15 ईयर्स ओल्ड, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन वो हॉकीज में, दिस मेड द हेडलाइन न्यूज़, उनके हॉकीज में देयर वाज लॉट ऑफ रेसिज्म। क्योंकि लोग जब समझते हैं, जब हम हॉकी देखते हैं तो हम यही दिमाग में हमारा आ जाता है कि जो हॉकी है, जो लोग हॉकी प्ले करते हैं, इट्स अ कैनेडियन गेम एंड वी ऑल आर कैनेडियन टू, इट्स बिलोंग टू द वाइट कल्चर। ये मैं नहीं कहती कि उसमें कोई पीपल ऑफ कलर नहीं है, किड्स ऑफ कलर नहीं है, बट वेरी फ्यू एंड फार इन बिटवीन। तो जो आज कल के हमारे बच्चे हैं, अगर वो हॉकी में जाना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, जस्ट लाइक एनी अदर स्पोर्ट्स लाइक सॉकर, बैडमिंटन, basketball, football, you name it. Everywhere, the kids should not be restricted to what game they can play and what game they cannot. So with that, today we're going to be talking to Cindy. Cindy, आपको हमारे स्टूडियोज में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू कमिला, आप हमें इनवाइट कराएं यहाँ पर और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बात मनता करें to inform our community. Yeah. So talk about your son now. Okay. My son Zach, he started playing hockey जब वो 5 years old था. He really loved hockey. We both like karate hockey. And जैसे अब वो 16 years old हो गए, every year वो love करे hockey खेलेंगे. But 2019 में हम लोग के थोड़ा trouble भे hockey में. There was a parent chat group and on it एक parent KKK video racist post करी था। जब वो post किया था तो और सब parents उन joke करे लगा, मजाक करे लगा। कोई parents सोचिस नहीं कि ये अच्छा नहीं है। तो मैं decided to make a final complaint. After we made the complaint to the association, we were not treated the same. We were treated like we were troublemakers. Second year, my son was told by the coach's kid that the association told his dad that he was a troublemaker and to watch out for our family. And then that year went okay. But the year after, the same coach who was with us in 2019 when the KKK video was posted, he was an ICE helper. And a lot of little things started happening again with my son. एक और एक लड़का था assistant coach के जो गोरा था, वो sometimes made racist comments, but उसके कुछ होए नहीं। जैसे जब वो लड़का कुछ करे तो coach बोले कि खाली sorry बोल के handshake करके सब चीज़ right है, but छोटा कुछ होएगा जो हमारा लड़का के तो वो suspend हो जाए hockey से। तो end of the season वो लड़का coach assistant coach के लड़का हमारा लड़का के घुसा मारिस, but coach हमें बताइस कि ये investigation होए और वो association के सब information दी, but whole summer हो गया but हम कुछ सुना नहीं। जब हम कुकुटलम association president के लगे email भेजा कि हम लोग worry करता कौन सी भे है, because हम लोग हमारे kids मांगे आए के hockey खेले, but हम लोग मंदा safe feel करे, but हमारा email के ignore करीस, हमें कोई रकम के respond नहीं करीस। तब वो time हम और हमारा husband सोचा कि अब हम लोग ये association safe नहीं है, then we decided to move both our kids to Port Coquitlam Hockey Association, and सब चीज़ अच्छा रहा, fest या कोई रकम के problem नहीं रहा, association में। But second year जब हम लोग game खेला against Coquitlam के,
जॉन फादर के वीडियो पोस्ट करी सरा उ ई टीम में रहा और जॉन लड़का के घुसा मारी सरा उसके डैड भी ये टीम में रहा तो फर्स्ट a period game में my son had a penalty and he was ejected from the game. Now our coach wrote a letter defending my son, saying it wasn't a malicious hit, that they were skating together and the other player turned in the last minute, and so my son ran into him from the back. And then what happened was he took that penalty. The coach talked to him. He said he'll see him after the game. And then my son and his dad and two other friends that were there with my son went upstairs in the community center. There was a cafeteria area to eat and watch the rest of the game. And jab he was sitting out up and dad ke sange game dekha tha. John father के video post करी सरा वो बैठी सरा अपन bar में लोग they were having lots of beers. जब वो हमारा लड़का के पास ऐसे गई वो वॉशरूम जाता हमारा लड़का के बोलीस तुम brown piece of shit है और उसके गाड़ी होती और चल दिस वॉशरूम में तो हमारा लड़का बोलीस अपन dad तुम सुना कौन सी बोलीस हमें my husband said, "Oh, I wasn't paying attention." My husband बोले, "Just leave it. अगर जो कुछ और बोली, then tell him to f off. Just leave it for now." Then my son said, "Okay." And then the man came back from the washroom, and then he started saying swear words again to my son. And then my husband heard this time, and then he walked back to the bar. This time, my husband बोली, "काय तुम छोटा लड़का से ऐसे बात करता है?" Then the other father, who was the assistant coach whose son had hit my son previously, ran up my husband के एकदम मुंह पे आई के नाक to नाक उसके गाड़ी दे बोले यहाँ से जाओ and then To my fellow citizens at home and abroad, Nisambula Vina'a, and a very good evening to you all. I offer you greetings for the year 2023. As we bid adieu to 2022, we must give thanks to the Almighty for His endless blessings to each of us and the nation as a whole. We must continue to have hope and trust each other that 2023 will be a year of revival, awakening, and a renewed spirit. We as a nation must stay positive despite the challenges that we are going to face this year. The uncertainty we are experiencing in the geopolitical environment cannot be swept under the carpet. At the home front, we have our own socio-economic challenges and deep-rooted mistrust among our different communities. Some of these events are beyond our control, and there continues to be uncertainty. We must all commit ourselves in working together to address these enormous challenges. Together we can find solutions if we are willing to trust and have faith in each other. Self-sacrifice must be made so that we can rediscover the spirit of togetherness as a family, as a community, and as a nation. I am positive and absolutely confident that with the guidance of the Holy Spirit, God's grace, and our collective demeanor, we will come back stronger together than ever before. It was the same at the start of last year. In my New Year message then, as a newly registered political party leader, I took inspiration for what lay ahead from some lines of a favorite poem. These lines keep coming back to me when preparing my 2023 New Year message. The poem was written by Minnie Louise Haskins White Balloon and was quoted by the late King George VI
in his broadcast in December of 1939, while the Empire was at war with Germany in the Second World War. And I quote, "I said to the man who stood at the gate of the year, 'Give me a light that I may tread safely into the unknown.' And he replied, 'Go out into the darkness and put your hand into the hand of God. That shall be to you better than light and safer than a known way.'" Unquote. Something else stayed with me from that address. Whilst I was helping to distribute food to the needy in Lautoka, I came across a tired-looking woman washing her family's clothes at a public tap in the park. We spoke, and she told me they were homeless. I offered her a ration pack. This woman, enveloped by her weariness and poverty, politely declined, explaining that she had eaten earlier. She said she was okay. That meant I had a food parcel for someone else in need. I wonder how she fared in the last 12 months and what this new year will mean for her. I'm very conscious of our government's commitment to helping the poorest of the poor. Despite uncertainties and problems, we pledge to continue welfare and development assistance already in place and to bring in new ones. Our overriding goal is to increase the national wealth so that everyone benefits: the homeless and all the poor, the housewives, children and young people, villagers and farmers, workers, civil servants and professionals, business owners and investors. I may also add the elderly, the sick, the prisoners, and our veterans. If I've left anyone out, I apologize. It is more than possible to achieve the change to higher living standards and a better quality of life. I know we have it within us to rise from the adversity, to construct a new homeland of prosperity, secured by peace and goodwill. My fellow countrymen, for this to happen to its fullest extent, a special ingredient must be released totally from the nation's heart. I'm speaking of unity, the harmonious coming together of our diverse communities with their different origins, cultures, and languages. I believe we are making progress in this, but we have not yet completely overcome the separateness imposed on us, the suspicions and tensions that have weighed us down. History placed us together. It is for us now to create another history, one of friendship and a shared purpose and shared dreams. Standing with you at the beginning of this year, I ask you to think about what I have just said, because from that comes a New Year resolution for Fiji. We resolve as citizens of this country to see beyond those things that have kept us apart, to put behind us the hurt, the sorrows, the tragedies. We resolve to be proud of our differences, to celebrate and accept them as part of a national identity that gives us the foundation and strength for remaking Fiji. My countrymen, we can complement the principles and ideals of this resolution by following the powerful yet simple eloquence of John Wesley, the founder of Methodism. And I quote, "Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as you ever can." Unquote.
If we listen to the man at the gate, we can follow the New Year resolution that I have offered. If we live in accordance with John Wesley's words, then we are on course for where we want to be. I see a new Fiji of limitless promise, with poverty removed and opportunities for all. It may not be very far away, even for the woman at the tap. It is up to us. One of my favorite Bible verses is from Psalm 133, a Psalm of David, verse 1, and I quote, "Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity," unquote. I wish you and your families a very happy new year, and may the almighty hand of God guide and uphold us all. God bless you. God bless Fiji. अब हमारे पास कुछ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट्स है. प्लीज हैव अ पेन एंड पेपर रेडी. फरवरी 6 को पिक सोसाइटी एक मेगा जॉब फेयर करने जा रहे हैं. स्टार्टिंग एट 10 a.m. at Italian Cultural Center in Vancouver, 3075 Slocan Street, Vancouver. There will be over 100 exhibitions and thousands of people will attend the job fair. For more information, please call Lily Dhardal at 604-596-7722, extension 331. Milky Way Immigration, along with others, are doing a stand-up comedy night on January 7th at 7 p.m. at Murrayville Community Hall in Langley. There will be comedy shows, snacks, dinner, one complimentary drink and photo booth with DJ. For tickets and more information, please call Manny Randawa at 604-790-9077. हमारे पास इतना ही समय था. अब हम आप सभी से विदाई लेना चाहते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो को देखने के लिए. हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजी इन फोकस से जुड़े रहे. इस शो को आप देख सकते हैं Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. our Vancouver time on Channel 4 and Calgary 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर Fiji in Focus को देख सकते हैं 24/7. Please press like button and do not forget to share and subscribe to our channel. इसको स्पॉन्सर करने के लिए प्लीज कॉल Camila at 604-537-5123. A very happy, prosperous and healthy New Year's to you from our team at Fiji in Focus. अपना फैमिली का ख्याल रखिए. Stay safe, stay healthy. मैं हूँ आपकी होस्ट सेरा शर्मा. Thank you for spending time with Fiji in Focus. Namaste.